أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر صدق الله العلي العظيم. Inshallah, today we will be moving on to another concept that is called the ابواب. So before moving to that concept, let us revise what we have done until now, so we can understand how important the ابواب topic is and what we already know and what we need to do to learn the previous concepts properly. Looking at the index, this is the unit 1 of Ilm al-Sarf, which has verbs. It is about verbs. And first we had the introduction, then we studied fail madi, then fail mudari, and today is the third topic, which is al-abwab. So in the introduction, we learned that there is always a fa'il with the fa'il. So an Arabic verb will always have a fa'il with it, which is the doer. A doer can be a hidden doer, or like which is not written in the word, or it can be a zamir mustatir, or it can be a zamir bariz. Then we learned about the persons. The first person means ana wa nahnu. Second person means anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. And third person means huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. So either a noun is, all the nouns and the verbs have a gender. So either it is a muzakkar or a muannas, and then all the nouns and the verbs will have a number. So either it's a mufrad or a musanna or a jama. We also call them wahid, tasniya or jama. Then the concept about conjugation, what is the meaning of conjugation? The meaning of conjugation is a verb can be conjugated into different forms to reflect different types of pronouns. Like the verb remains the same, but the pronoun keeps on changing, right? And this is the first example, which is al-mukhatab, al-mukhataban, al-mukhatabun, sorry, al-ghaib, al-ghaiban, al-ghaibun, al-ghaibah, al-ghaibatan, al-ghaibat. And then we have al-mukhatab, al-mukhatabat, ban, al-mukhatabun, al-mukhatabah, al-mukhataban, and al-mukhatabat. And then we learned about al-mutakallim and al-mutakallimun. So there can be 14 persons. Now, these were some notes about the introduction, and these were the terms that we learned in the introduction. Then we moved on to the part 1, which was fail al-madi. Al-madi is the expression of a verb that was done in the past. So when we say fataha zaidun, it means Zaid opened. So fataha has a damir mustatir in it, and there are some zamair baris. We studied them in our lesson, like jalastu and jalasna have damair barizah. Then we moved on to the conjugation of fi'l madi, right, which has to be memorized. It is essential to memorize the conjugation, the tasreef of fi'l madi. So it was fataha, fataha, fatahu, fatahat, fatahata, fatahna. Now, there is a point here I want to explain, and it is very important that the pronunciations are very, very important in Arabic language. Maybe there are some languages where pronunciations are not very important, but in Arabic language, usually, and for Quran especially, it is essential to have the correct pronunciations. Otherwise, one word changes into another word, and it gives another meaning, and then it reflects upon everything that is in Islam. Okay, so if I say fataha, it means one person. If I say fataha, it means two persons. If I say fatahu, it means many persons. So it's not like if we say anything, it's going to mean the same. No, it's not going to mean the same. Okay, there is a very great emphasis on for this, especially in Tajweed, and that is why we are very, very strict on Quran. Always when the student is reading, we are always pointing out mistakes, and always we are saying not fataha, say fataha, not fataha, say fataha. So here I'm also hearing some mistakes from our students. Like the students are saying, for this word, they are saying fatahta, fatahta. No, fatahta is not correct. This is not fatahta. This is fatahata, fatahata. You can say it with a slower speed if you want to clarify, if you want to pronounce it very correctly. You can say fatahata, right?
but mispronouncing the word will change it into another word that is fatahta. So this word is fatahta, fatahta. That word was fatahata, fatahata. I pointed out this mistake last time as well, but still I'm hearing some mistakes. Okay, so this is why I'm emphasizing a lot on this. Okay, so the conjugation for fataha was fataha, fataha, fatahu, fatahat, fatahata, fatahna. So when we say fataha, it means huwa fataha. And when we say fataha, it means huma fataha, hum fatahu, hiya fatahat, huma fatahata, hunna fatahna. And then anta fatahta, antuma fatahtuma, antum fatahtum, anti fatahti, antuma fatahtuma, antunna fatahtunna, ana fatahtu, nahnu fatahna. Now this is fatahna, not fatahna. Fatahna was this one, number 6. This one was fatahna. The last one is fatahna, khalaqna, nahnu ja'alna, nahnu khalaqna. Right? So you can easily observe here what difference it makes in the translation. So if I say nahnu fatahna, it means that we opened. If I say nahnu fatahna, that's not correct. That's we, those ladies opened. No, that's not correct, right? So this is very important. That's why I'm emphasizing so much on it. So let's move on. Then we had the exercise, and we did the exercise. Then we had some examples with the masadar, right? And we were also introduced to another word which is fa'il mudari, like ba'asa, yab'asu, ba'san. So yab'asu is fa'il mudari, and ba'san is the masdar. We moved on to the next concept of fa'il mudari in part 2. So in fa'il mudari, we learned that every word of fa'il mudari reflects 3 translations. Either it is a present habitual, or it is a present continuous, or it is a future, right? One word for 3 meanings. So in a sense, it makes it easy. You don't have to remember all the words for everything, but what we need to do is to translate according to the context. Understanding the sighas of fail mudare. So fail mudare has 4 parts in it, and these are the 4 parts. The first is the alamat fail mudare or huruf al mudare. Huruf al mudare. So huruf al mudare is one of the huruf atain, hamza, ta, ya, nun, and then we have the fail, and then we have the pronoun. Either it's a wahid or a tasniya or a jama according to that. And then at the last place we have the noon arabi, which will be explained later. But we should know that this is called noon i'rabi. Noon i'rabi. Also, we should know that in the fi'l mudari, 5 sighas have damir mustatir, and the sigha of these are the sighas of ghaib, ghaiba, mukhatab, mutakallim, and mutakallimun. So these have hidden pronouns. Huwa yaftahu, hiya taftahu, right? Anta taftahu, ana aftahu, and nahnu naftahu. Then we had the conjugation of fi'l mudari, yaftahu, yaftahani, yaftahuna, taftahu, taftahani, yaftahna. We should understand that in the sixth sigha, which is yaftahna, the noon here is not in orange color. It is in purple color. So this is not noon i'rabi. This one is noon niswa. Okay, this noon is called noon niswa. This is not noon i'rabi, and it would never be changed or dropped throughout. Whatever the case may be, the noon niswa will be there. So فتح يفتح يفتحان يفتحون تفتح تفتحان يفتحنا, and then تفتح تفتحان تفتحون تفتحين تفتحان تفتحنا, and then أفتح and نفتح. Then we moved on to the exercises. Now coming to today's topic, which is ابواب. Oh, it took me 10 minutes, 10 to 12 minutes just for revision. ابواب part 3. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. What is the scale of a verb? The scale of a verb is the letters fa, ain, and lam are used as the scale of the word. This is also called wazan. Please write it down. Wazan. So what is wazan? Wazan is the scale of a word. The scale of word is called wazan, right? So, for example, the scale of verb zahaba is fa'ala. Whatever verb you have, you correspond it to the wazan, to the standard, which is fa'ala. The standard for fi'l madi is fa'ala. The standard for fi'l mudari is yaf'alu. The standard for fi'l amr is if'al. The standard for
ism fa'il is fa'ilun. The standard for ism maf'ul is maf'ulun, and so on. Each letter of a word is named after the letter it corresponds to. For example, in the word zahaba, the letter zal is labeled the fa kalima. The letter ha is labeled as ain kalima, and the letter ba is labeled as lam kalima. So we usually say fa'ul fa'il, ainul fa'il, and lamul fa'il. Fa'ul fa'il, ainul fa'il, lamul fa'il, right? Inshallah, I understand that you know this already. So fa, ain, and lam will be at the wazn. Za, ha, and ba will be at the wazn of fa, ain, and lam. The harakat of the ain kalima. The ain kalima of a word of a fi'l madi can have any of the three letters of the three harakat, either a fatha or dhamma or kasra. So making things simplified, let me skip this one. And similarly, the ain kalima of the fi'l mudari can have any of these three harakat. So this is the ain kalima of fi'l mudari. Like if we have the word yaftahu or yakrumu or yadribu. So these three are the alamat fi'l mudari or full mudari, also called alamat fi'l mudari. It can be a ya, it can be a ta, it can be a hamza, or it can be a noon. Then these are the fa kalimas corresponding to fa, and these are the ain kalimas corresponding to ain, and these are the lam kalimas corresponding to lam. So fa kalima, ain kalima, and lam kalima. The same goes to mazi. Mazi is very easy. It is on the fa, ain, lam. So fa, ta, ha, like fa kalima, ain kalima, and lam kalima. We also call them fa ul fa'il, ain ul fa'il, and lam ul fa'il. You can take a screenshot if you want to. In the fa'il mudare, the first letter is always an alamat of fa'il mudare. And this is how you recognize a madi with the mudare. Mudare will always start with one of the four letters, hamza, ta, ya, noon. Otherwise, it will not be mudare, because these are the alamat fa'il mudare, huruf al mudare. Combination of verbs based on the various combinations of the ain kalima of al-madi and al-mudari. Verbs are divided into different categories. Each of these is called a bab. The plural of bab is called abwab. Each bab is named after one commonly used verb which falls on the pattern. So we have 6 abwab. In theory, there are 9 possible combinations. In theory, okay? In theory, there are 9 possible combinations, but practically only 6 are used in the Arabic language. In the Arabic dictionary, only 6 are used. So either we can have 9 combinations, like if we have Madi, for example, let's ponder upon this Madi and Mudare. So Madi has a fatha, Mudare has a fatha. Madi has a kasra, Mudare has a kasra. Madi has a dhamma, Mudare has a dhamma. It makes 3 combinations, right? Then changing the harakat, right? Changing the harakat. So it will make 9 combinations, but only 6 are used in the Arabic dictionary. Number 1, fataha yaftahu. Number 2, sami'a yasma'u. Number 3, daraba yadribu. Number 4, nasara yansuru. Number 5, karuma yakrumu. And number 6, hasiba yahsibu. These 6 combinations are possible according to the Arabic dictionary. Sorry. So these 6 are called the abwab of fi'l sulasi mujarrad. Abwab fi'l sulasi mujarrad. The abwab, the gates of the fi'l verb sulasi mujarrad. These are the combinations of these are the entry gates of the fi'l sulasi mujarrad. Sulasi means 3-lettered. Mujarrad means without any attachments. And fi'l means verb, you know that. Okay, so either it can be a fataha yaftahu, or it can be a daraba yadribu, or it can be a nasara yansuru, or it can be a sami'a yasma'u, or it can be hasiba yahsibu, or it can be karuma yakrumu. The most frequently
used bab in the Quran Majid is the bab nasara yansuru. And then after that is fataha yaftahu. And then after that is daraba yadribu. And then after that, all the three are not very commonly used. Maybe all the three, if you combine them together, maybe it will make around, in the Quran, I think it will not make more than 20%, not more than 20%. Okay. And all the three are the most of the time nasara yansuru is used, or fataha yaftahu, or daraba yadribu. There is a note here. The names of the abwab are sometimes represented by the first letter of the verb. For example, the bab of fataha is represented by a fa in the brackets. Sami'a is represented by a sin in the brackets, etc. This is about page 30. Now, we know already that bab of fataha yaftahu, and we also know the conjugations of these verbs. Fataha yaftahu. So fataha, fataha, fatahu, fatahat, fatahata, fatahna, fatahta, fatahtuma, fatahtum, fatahti, fatahtuma, fatahtunna, fatahtu, fatahna. And then yaftahu, yaftahani, yaftahuna, taftahu, taftahani, yaftahna, taftahu, taftahani, taftahuna, taftahina, taftahani, taftahna, aftahu, and naftahu. So okay, so let me reshare. So he has taken it at number 2. If I was there, I would take Nasara Yansuru at number 2 because that's very important. Fataha is, of course, Bab al-Fath. So we open with the opener, right? And then we move to the helper. Let's take Nasara Yansuru. नहीं, इन्होंने पहले दरबा लिया है. Nasara Yansuru. This will break the sequence a little bit, but it's better because the most frequently is Nasara Yansuru. So in the Bab Nasara Yansuru, we have most of the verbs in the Quran. We are studying all Arabic for the Quran. Okay, keep it in mind. So Nasara will have the Mudari Yansuru. So Yansuru, Yansurani, Yansuruna, Tansuru, Tansurani, Yansurna, and then Tansuru, Tansurani, Tansuruna, Tansurina, Tansurane, Tansurna. Ansuru and Nansuru. Not Ansaru, Nansaru. Okay, Ansuru, Nansuru. So what's new in it? These are some examples of Bab Nasara Yansuru. The first thing you have to do is to send me conjugations, verbal conjugations of every one of them. So we have two words, a Madi and a Mudare, right? So we have 2, 4, 6 examples, 6 and 6, 12 examples, 12 2s are 24. I must have 24 messages at least from every one of you, at least 24. Okay, this is your homework. I'm making the homework easy, so you can, inshallah, handle it. Okay, so who is the first one? Conjugation. जी कहिए. ये जो नसरा यंसुरु उसके बाद नसरन है. नसरन, ये नसरन इसका मसदर है. यानी जब आप डिक्शनरी खोलेंगे, when you will open the dictionary, you will not find nasara, you will not find yansuru, you will not find nasaru, nasarat, nasarata, nasarna, nasarta, nasartuma, nasartum, nasarti, nasartuma, nasartunna. No, you will not find any one of those words. What word you will find in the dictionary is nasran. Okay, you will find this nasran in the dictionary, and you should know how to generate each one of the sigas
in fi'l madi ma'roof, in fi'l mudari ma'roof, in fi'l madi majhool, in fi'l mudari majhool, in fi'l amr ma'roof, in fi'l amr hadir, in fi'l amr ghaib, right? With the noon ta'keed thaqila, with the noon ta'keed khafifa, with the huruf al-jazima, right? With the negations, with the lam amr, with the la nahiya, right? All the sigas, a person should know how to generate them. In the dictionary, you will only find this one word, nasran. And the word nasran means to help. It doesn't mean he helped, or she helped, or they helped, or I will help, or you are helping, or she was helping, or she will be helping, or they both will be helping, or they both did help. No, you will not find anything in the dictionary. You will only find one word, nasran. Nasran means to help. Thank you, Mother. Or you will find the word bulughan. Bulughan means to reach. To reach. You will not find he reached, or she will reach, or they are reaching, or I was reaching. No, nothing like that. You will only find bulughan. The root letters for bulughan are ba, lam, and ghain. That is why we just dropped the waw to form balagha. And we also dropped the last alif with the fathatain. Now, how do we make that is another question, and that is about the dictionary of the Quran. That's another subject. Okay, that's not a topic. That's not a topic. That's a full subject like al-musarf. That's a complete full subject. And alhamdulillah, I also teach that. That is called Mufradatul Quran. This is a masdar or noun file? This is about masadar. Masadar. This is about masadar. नहीं आपने क्या पूछा? आवाज नहीं आई मुझे. कि मस्दर है या नाउन फाइल है? बुलूगन जैसा आपने बताया. नाउन फाइल. जी बुलूगन मस्दर है. इस्मुल फाइल. अच्छा ये हाँ इसमें फाइल नहीं है ये. नहीं इसमें फाइल तो होता है बालिगुन. ओके. आप लोगों को मेरी आवाज सही से आ रही है आज? जी 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 हाँ आ रही है. ओके आप लोगों को सही से आ रही है ना? ओके. So this is another subject called Mufradatul Quran. In the Mufradatul Quran, we learn about the root letters and the masadar and what's the connection between them. So I teach this book of Raghib Isfahani. Sunnis call him Imam Raghib, but I don't call him Imam. So this is from Raghib Isfahani, and he has gathered all the mufradat from the Quran, and he explains why like I say that Dad Ra Ba means to hit. Dad Ra Ba. Or for example, I say Noon Swad Ra means to help. So what's the proof of it? Is there a proof? Yeah, bas bol diya to bol diya. No, not like that. Noon Swad Ra is to help. So what's the proof? So he brings the proof from the Quran, and he also brings proofs from the Kalamul Arab. Okay, like from the poetries or from the prose or anything, right? Some of the masadar, like many of the masadar are very, very common, and they are very much known because of the Quran. Okay, and many of the masadar are not so known, but still they are used in the Arabic language, right? So his study is about the dictionary of the Quran, not the Arabic dictionary, right? When you speak about Arabic dictionary, that there are 45 ابواب, but when we speak about the Quranic dictionary, we have like 6 or 12, 18, total 18 ابواب. Total we have 18 ابواب that we study, right? So Noon, Saad, and Ra. What's the proof about it? And then there is another book that is called Lisanul Arab. So Lisanul Arab is more for the Arabic literary works. Okay, Lisanul Arab is more about Arabic dictionary, the language of the Arabs, right? So there are like there are so many discussions about this. Okay, we don't want to
just for an introduction, this was something. Okay, so inshallah, let's begin. Who is the first one to conjugate today? देखें, अब इसमें आप लोगों की मर्जी होगी, जिसको फेल माजी करना है वो फेल माजी करे, जिसको फेल मुदारे करना है वो फेल मुदारे करे, जिसको दोनों करने हैं वो दोनों करे। ठीक है, समय आप का अपना करूं मैं? चांस मिस नहीं करें। आपको हेलो, समय नहीं है यहाँ पे नसरा। आपकी आवाज आज कट रही है सिस्टर, आपकी आवाज आज कट रही है। पता नहीं, मेरी तरफ से तो आपको ऐसे मेरी ही आवाज आई आ थी। रही है जी सिस्टर जी, मुझे फातिमा? आ रही है। जी जी, आ रही है। Can everyone else hear me properly? Yes, it's a bit of cut off now and then. No, it's good. No, from my side or from sister Fatima's side? आई थिंक it's फ्रॉम from माय your साइड side. मे बी। क्या बोल रहे हैं? पता नहीं, मेरी तरफ मुझे तो आवाज बराबर आ रही है। अच्छा, मुझे भी आपको मेरी आवाज बराबर आ सही रही नहीं है। आ रही है। आप मौलाना, आपका आवाज थोड़ा now and then फेड होता है मेरे अच्छा, साइड मैं से। अपनी जगह चेंज करता हूँ सबर का। मैं अपनी जगह चेंज। अच्छा, कभी भी अगर आप लोगों को आवाज कट ऑफ हो रही हो ना, तो आप मुझे उसी वक्त बताएं फौरन। ठीक है, डोंट जी। वेट फॉर एनीथिंग। आप मुझे आप यानी आप 5 मिनट वेट करें, अगर 5 मिनट में आवाज ठीक नहीं होती तो आप लोग मुझे कोई ना कोई बता दिया करें, ताकि ये जो कम्युनिकेशन है उसमें गैप नहीं आए। चलें जी, तो हम इंशाल्लाह शुरू करते हैं। कौन शुरू करेगा? सिस्टर नसर, फातिमा आप शुरू करें। नसरा। ओके। नसरा यंसुरु, नसरा यंसुरानी, यंसरानी, यंसुरानी। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं नसर, ऐसे नहीं ऐसे नहीं, नहीं। पहले सिर्फ पहले नसरा माजी। बोले, उसके बाद सिर्फ यंसुरु बोले। ओके, पहले माजी। नसरा यंसरा, सॉरी, हाँ, नसरा यंसरा, नसरु, नसरत, नसरता, नसरना, नसरता, नसरतुमा, नसरतुम, नसरती, नसरतुमा, नसरतुन्ना, नसरतो, आगे नसरना। सही। इसके बाद यंसुरु। यंसुरु, यंसुरानी, यंसुरुना, यंसुरु, तंसुरु, तंसुरानी, तंसुरना, यंसुर। तंसुरना, तंसुरना, यंसुरना, सॉरी, नहीं यंसुरना, नहीं, तंस ऐसे नहीं ऐसे नहीं हाँ, ऐसे नहीं ऐसे नहीं, ऐसे बहुत हैपेजर्ड हो जाएगा। आप अपने उंगलियों पे गिने इसको। ठीक है, आप इसको अपने उंगलियों पे गिने और एक एक सिगा करके बोलना। जल्दी जल्दी बोलना जरूरी नहीं है। मैं जल्दी जल्दी इसलिए बोलता हूँ ताकि आप लोगों का टाइम नहीं जाए। ठीक है, अच्छा, तो एक एक यं करके बोले गिन के। शुरू से शुरू करें, आपकी आवाज वैसे ही क्लियर नहीं है। यंसुरु, यंसुरानी, यंसुरुना, तंसुरु, तंसुरानी, तंसुरना, यंसुरना, यंसुर। यंसुरना, तंसुरु, तंसुरानी, तंसुरुना, तंसुरीना, तंसुरानी, तंसरुन्ना, तंसुरना। तंसुरना, तंसुरु, तंसुरना। ना ना ना, No, sorry, no, अनसुरु no, sorry, और sorry. नंसुर। Ansuru, Ansuru, नन Nansurna. और हम बारी देते हैं। नेक्स्ट हु कैन इंशाल्लाह हु कैन डू इट मैं नेक्स्ट। कोशिश कर सकती हूँ। हाँ ठीक है, आप पहले पढ़ें बलगा। अच्छा, बलगा का। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बलगा, बलगा, बलगू, बलगत, बलगता, बलगना, बलगता, बलगतुमा, बलगतुम, बलगती, बलगतुमा, बलगतुन्ना, बलगतु, बलगना। अच्छा, इसमें 2 मिस्टेक्स थी प्रोनाउंसिएशन की। ठीक है, मगर कोई बात नहीं, आप यब लोगो बोले। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यबलुगु, यबलुगानी, यबलुगुना, तबलुगु, तबलुगानी, यबलुगना, तबलुगु, तबलुगानी, तबलुगना, तब लोगो तगलुबीना, तगलुबीना, तगलुबानी, तगलुबना, अगलुबु, नगलुबु। ना लोगो। ओके, इसके अंदर एक मिस्टेक थी तब लोगूना वाली। ठीक है, अच्छा, नंबर 9। तबलुगुन।
नंबर 9 की मिस्टेक थी इसके अंदर। चलें कोई बात हाँ, नहीं, लेकिन ऐसे ही फिर भी सीखता कितने है। टाइम के बाद इतने टाइम के जी बाद हाँ, अभी इसी तरह बंदा सीखता है, स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, गलती करके हाँ ही इंसान सीखता है। चले नेक्स्ट कौन आएगा प्लीज बताइए। बिस्मिल्लाह। जी सिस्टर साबरा, जी आपकी वॉइस बहुत क्लियर होनी चाहिए, थोड़ा जोर से बोलिए, ठीक है। ओके। तरक, तरका, तरकू, तरकत, तरकता, तरकना, तरकता, तरकतुमा, तरकतुम, तरकती, तरकतुमा, तरकतुन्ना, तरकतु, तरकना। वेरी गुड। अब बताइए यतरुकु। ओके। यतरुकु, यतरुकु ना, यतरुकु नी, नहीं यत नहीं, आपने याद नहीं किया इसको। ये मेरे प्रेजेंट टेंस बहुत मुश्किल लगता है मौलाना। अच्छा चले कोई बात नहीं, मैं आपको याद कराता हूँ, आप मेरे साथ याद करें। जिसको भी जी याद नहीं है वो मेरे साथ मिलके अपना माइक म्यूट ही रखें। सिर्फ हाँ। सिस्टर साबरा जो है वो माइक ऑन रखें, बाकी लोग जो है म्यूट रखें और मेरे साथ साथ पढ़ें। यत्रुकु यत्रुकाने यत्रुकूना। यतरुकु, यतरुकाने, यतरुकना। नहीं गलत। यत्रुकु यत्रुकाने यत्रुकूना। यतरुकु, यतरुकाने, यतरुकना। नहीं, आप सुने जरा गौर से। यत्रुकु यत्रुकाने यत्रुकूना। यतरुकु, यतरुकाने, यतरुकूना। जी, ये शुरू के 3 मैं सिर्फ बोल रहा हूँ, सिर्फ शुरू के 3 बोल रहा हूँ, ठीक है। जी अच्छा चले, अब मैं मुझे कंफ्यूजन समझ में आ गया है। आई डोंट थिंक दिस इज अ गुड आइडिया। ठीक है, आप इसको इस तरह 3-3 करके याद करें। 1 2 ओके। 3। हाँ जब 1 हाँ 2 3 पक्का हो जाए फिर 4 5 6। जी जब जी 4 जी 5 6 पक्का हो जाए तो 1 2 3 4 5 6। हाँ ठीक है, हाँ, मैं एक दफा मिक्सअप हो 2 दफा जाती। 3 दफा से नहीं होगा, ये कम से कम 20 दफा करना होगा हाँ हर हाँ, एक तो स्टेप। एवरी मैं अभी इसका ये प्रैक्टिस कर रही हूँ। कोई मसला नहीं, प्रेजेंट टेंस मुश्किल है मेरे लिए। हाँ कोई मसला नहीं है, इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आसान हो जाएगा। एक टाइम था इंशाल्लाह। जब पास्ट टेंस भी आपके लिए मुश्किल था, लेकिन हम्म। इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आसान हो गया। हम्म, तो ये भी हाँ जो है आसान हो जाएगा, अल्लाह आसानी करेगा इंशाल्लाह। ठीक है, इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह। अच्छा, अब इसको याद करने का तरीका क्या है, देखें सिस्टर साबरा ने जो बात समझाई हमको, तो इससे ये समझ में आया कि इसको याद करने का तरीका क्या है। इसको याद करने का तरीका ये है कि पहले 1 2 3 पढ़ें। यत्रुकु यत्रुकाने यत्रुकूना, 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 यत्रुकु यत्रुकाने यत्रुकूना। ठीक है, कैसे पढ़ रहा हूँ मैं, तोते की तरह। ठीक है, तोते की तरह पढ़ना है इसको। ओके, सेम रिपीटेशन। जब 3 हो गया ना, जब शुरू के 3 आपको कंफर्म हो गया कि ये मुझे ठीक याद हो गया, फिर आप लीजिए नंबर 4 5 एंड 6। नंबर 4 5 6 क्या है, तत्रुकु तत्रुकाने यत रुकना, 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 तत्रुकु तत्रुकाने यत रुकना। ठीक है, ये ऐसे मुंह पे फ्लो करेगा। ठीक है, इसको जी बार 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 पढ़ना है। ऐसा नहीं कि 10 दफा पढ़ा और थक गए, नहीं ऐसा नहीं। एटलीस्ट एक एक कॉन्जुगेशन को याद करते हुए तकरीबन उसको 100 दफा पढ़ना होता है, फिर वो याद होती है। ठीक है, जी जब बंदा 10 कॉन्जुगेशंस को 100 दफा पढ़ लेता है ना, तो उसको पूरा नक्शा समझ में आ जाता है, पूरी डिक्शनरी समझ में आ जाती है उसको। ये इस इल्म का कमाल है। ठीक है, ये इस इल्म का कमाल है। आप 100 कॉन्जुगेशंस अगर आप बोल सकते हैं ना, तो आप पूरी डिक्शनरी बोल सकते हैं। ठीक है, डिक्शनरी में पता है कितने वो हैं, कितने मसादर हैं, तकरीबन तकरीबन अरबिक डिक्शनरी में कितने मसादर हैं, ये वैसे एक बहुत अच्छा सवाल है। लेकिन कुरान के कितने मसादर हैं, कुरान के अंदर 1750 के करीब मसादर हैं, 1750। वो सब आपको समझ में आ जाएंगे। कैसे समझ में आएंगे, 100 कॉन्जुगेशन याद करने से। ठीक है, 100 जी कॉन्जुगेशन याद नहीं करनी है, ऐसा नहीं है कि आपको हर चीज याद करनी है, नहीं। इट्स जस्ट लाइक टेबल्स। ये 2 का टेबल पहले याद करना होगा, 2 का टेबल याद करेंगे तो 4 का टेबल आसान हो जाएगा, 4 का टेबल याद करेंगे तो 8 का टेबल बिल्कुल आसान हो जाएगा। ठीक है ना, राइट। अब इसके इंशाल्लाह। बाद क्या आएगा, इसके बाद आएगा 6 का टेबल। ठीक है, जो एग्जैक्ट डायरेक्टली नहीं है लेकिन इनडायरेक्टली मल्टीपल ऑफ 2 है, राइट। इसके बाद क्या याद करना होगा, इसके बाद 3 का टेबल याद करना होगा, नए सिरे से, बिल्कुल नए सिरे से, नया टेबल जिसका 2 से कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, उसके बाद आप 3 को याद करेंगे तो 6 आराम से याद हो जाएगा, 6 याद करेंगे तो 9 बिल्कुल आराम से याद हो जाएगा, राइट। और इसके बाद बाकी क्या बचा, बाकी बचा 5। 5 का टेबल वैसे ही आसान होता है। ठीक है, 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50, 5 5 के मल्टीपल्स होते हैं, 5 होता है या 0 होता है, राइट। अब बाकी क्या बचा, बाकी बचा 7 का टेबल। ओके, 7 का टेबल आपको याद करना होता है। 7 का टेबल सबसे मुश्किल होता है, ठीक है ना,
क्योंकि उसका कभी किसी से लिंक मिलता है, कभी किसी से लिंक नहीं मिलता है, कभी प्राइम नंबर्स होते हैं, कभी ऑड नंबर्स होते हैं, कभी इवन नंबर्स, सारे नंबर्स होते हैं उसके अंदर 7 के टेबल में। ठीक है, तो अभी जो आप लोग कर रहे हैं, जो फेल माजी का जो टेबल है वो आप समझो कि 2 का टेबल है। ठीक है, इसके बाद फेल मुजारे का जो टेबल है वो आप समझो 3 का टेबल है। ठीक है, 3 का टेबल है। तो ये 2 और 3 का टेबल जब आप याद करोगे तो आपको 4-5 टेबल खुद ब खुद वैसे ही याद हो जाएंगे। ओके, तो जी आप लोग इसको बहुत मुश्किल टास्क नहीं समझना, ये हम्म, आसान टास्क है इंशाल्लाह। ठीक है, इंशाल्लाह अल्लाह आसानी करे सबके लिए। और आप लोग हम्म, इसी तरह याद करें और मुझे भेजें। जब आप अच्छा मुझे भेजेंगे तो आपकी जबान पे रवानी आएगी, रवान होगा ये हम्म, रवान होगा आपकी जबान पे। आपकी जबान पे रवान होना जरूरी है। जब तक आपकी जबान पे ये रवान नहीं होगा, यू विल नॉट बी एबल टू रिकॉग्नाइज द सीगास, एंड दैट्स अ गारंटी। आई हैवंट हम्म, I haven't met anybody who knows the sigha, but he doesn't know the conjugation. If he knows हम्म, the conjugation, then he will correctly find the sigha. Otherwise, he will find the wrong sigha. Okay? ये किसके साथ होता है पता है आपको? ये होता है अरबों के साथ। अरबों का ये मसला होता है कि वो हम्म, समझते हैं कि अरबी तो हमारी जबान है, हम क्यों याद करें? Why should हम्म, we memorize these tables? Why should we memorize these conjugations? We don't need to. We are Arabs. Okay? And हम्म, they are the ones making the most of the mistakes in recognizing the sigas. Why? क्योंकि उन्होंने तरीके से याद नहीं किया ना, स्टेप बाय स्टेप नहीं समझा बात को। वो समझे बस हमारी जबान है तो हमको सब आता है, सब नहीं आता है। उर्दू बोलने वाले जो होते हैं ना, उनको भी उर्दू के हर लफ्ज का मतलब नहीं आता है। कोई ना कोई लफ्ज होता है जब डिक्शनरी खोलनी पड़ती है, कोई लफ्ज होता है जो किसी बड़े से पूछना पड़ता है कोई लफ्ज होता है जो किसी किसी से रेफरेंस लेना पड़ता है, तो हम्म। इसलिए ये जरूरी है। अब कोई और रेडी है इंशाल्लाह आने के लिए? मैं आऊँ मौलाना, ट्राई करूँ। जी, आप माजी के पढ़ेंगे या मुजारे के? मुजारे के पढ़ते हैं या शुरू से जरा देखेंगे यंसुरु, कितना पढ़। यंसुरु पढ़िए, यंसुरु। यंसुरु, ओके। यंसुरु, यंसुरानी, यंसुरुना, तंसुरु, तंसुरानी, यंसरना, यंसुरना। यंसुरना, जी जी। अ, फिर फिर तंसुरु। तंसुरु, तंसुरानी, तंसुरुना। जी। उसके बाद तंसरी, तंसरीना, तंसुरीना। तंसुरानी, तंसुरीना, तंसुरानी, तंसरना, तंसुरना। तंसुरना, अंसुरु, अंसुरु, यंसुरु, नंसुरु। नंसुरु, अंसुरु, नंसुरु। नंसुरु, माशाल्लाह, बहुत अच्छी कोशिश की आपने, माशाल्लाह, वेरी गुड। मजीद आप ट्राई करेंगी? और कौन सा ट्राई करूं, बोलिए। यह शुरू, मैं यह शुरू। मैं आपको आसान सा बताता हूँ, आसान सा, जिसको प्रोनाउंस करना जरा आसान हो वो बताता हूँ। यत्रुकु करें, यत्रुकु। ओके, ये उंगलियों पे काउंट करके पढ़ रही हूं मैं। यत्रुकु, यत्रुकानी, यत्रुकना, यत्रुकुना। यत्रुकुना, तत्रुकु, तत्रुकानी, यत्रुकना, राइट। तत्रुकु, तत्रुकानी, तत्रुक तत्रुक तत्रुकुना, राइट। फिर ये तो तत् तत्रुकीना, तत्रुकुना, यकीना, तत्रुकाने। तत्रुकीना, हाँ क्या बोले मौलाना? तत्रुकीना, तत्रुकाने। तत्रुकीना, तत्रुकानी, तक रुकना, तत्रुकना, अतरुकु, नतरुकु। नत्रुको। अहसनती, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, अहसनती, वेरी अब गुड। ये इसी लिखूंगी तरह मैं और लिखे तो जरा प्रैक्टिस हो जाएगी। हाँ, लिखेंगे तो उससे भी जहन नशीन हो जाएगा, जहन में बैठ जाएगा। ठीक है, जी जी। बहुत अच्छा तरीका है लिखने का। बल्कि आप लोग ऐसा करें कि ये जो आपके पास ये मैंने दिखाया है, ये टेबल, इसका आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लें, और ये जो है मुझे लिखा हुआ भी चाहिए। यानी जब आप फेल माजी कर रहे हैं उसके साथ आप फेल मुजारे भी करें और लिखें। और पहले पेज पे पहले पेज पे सिर्फ नसरा लिखें, उसके 14 सीगे ऊपर से नीचे ले जाएं। फिर उसके बाद उसके उसकी डिटेल लिखें, सेकंड कॉलम में लिखें कि इसका
ज़मीर कौन सा है? पहले आप लोग एक स्क्रीनशॉट लें, फिर मैं आपको उसका नक्शा भी देता हूँ। ये लीजिए आप लोग, बल्कि इसका स्क्रीनशॉट मैं आप लोगों को उस पर शेयर कर दूंगा ग्रुप पे। ओके, इसका स्क्रीनशॉट मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा ग्रुप पे। अब इसको करना कैसे है? पहले आप लेंगे नसरा, एक पेज पे आप लेंगे नसरा, फुल पेज, ठीक है, पेज नहीं बचाने। सबसे पहले तो आप उसका कॉन्जुगेशन लिखेंगे पूरा नसरा का, नसरा का पूरी कॉन्जुगेशन आपने 1 से लेके 14 तक लिख ली, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप लिखेंगे उसकी जमीर, हुआ हुमा हुम हिया हुमा हुन्ना, ठीक है। इसके बाद आप लिखेंगे इसका सीगा, कौन सा सीगा है ये, वाहिद मुजक्कर गायब, तस्निया मुजक्कर गायब, जमा मुजक्कर गायब, वाहिद मुअन्नस गायब, तस्निया मुअन्नस गायब, जमा मुअन्नस गायब, ठीक है। वो जो वाहिद मुतकल्लिम, जमा मुतकल्लिम, जो भी सीगा है वो लिखेंगे। फिर आप यहाँ पे लिखेंगे इसका ट्रांसलेशन। अब ट्रांसलेशन आप चाहें तो उर्दू में लिखें, चाहे तो आप इंग्लिश में लिखें, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये बन गया नसारा, ये बन गया नसारा का पेज, ठीक है। नेक्स्ट पेज आप लें, ये मैं आपको इसका भी स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगा, ठीक है। अब आप लीजिए नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट पेज पे आप क्या लिखेंगे, यनसुरु लिखेंगे। कहाँ से शुरू करेंगे, यनसुरु, यनसुरु यनसुराने यनसुरूना, तंसुरु तंसुराने तंसुरना, तंसुरु तंसुराने तंसुरूना, तंसुरीना तंसुराने तंसुरना, अनसुरु एंड ननसुरु, ये पूरे 14 चीजें जो हैं इसके आपने इस कॉलम में लिख दिए 1 से लेके 14 तक। फिर यहाँ पे आप लिखेंगे इसके जमीर, जमीर क्या होती है, हुआ हुमा हुम हिया हुमा हुन्ना, अंता अंतुमा अंतुम अंती अंतुमा अंतुन्ना ना नहनु। तीसरे कॉलम में आप लिखेंगे सीगा, सीगे का नाम क्या है, वाहिद मुजक्कर हाजिर, वाहिद मुजक्कर गायब, तस्निया मुजक्कर गायब, जमा मुजक्कर गायब, वाहिद मुअन्नस गायब, तस्निया मुअन्नस गायब, जमा मुअन्नस गायब, राइट। वाहिद मुजक्कर हाजिर, तस्निया मुजक्कर हाजिर, जमा मुजक्कर हाजिर, राइट। ये जब आप लिखेंगे ना 10-15 दफा, तो ये बात जो है आपके दिमाग में बैठेगी, ये बात आपके दिमाग में बैठेगी और ये टेबल आपको समझ में आ जाएगा। लास्ट कॉलम में लेफ्ट साइड पे आप लिखेंगे ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन चाहे आप उर्दू में लिखें या इंग्लिश में लिखें, ठीक है, आपकी मर्जी है। अच्छा, ये टोटल जो एग्जांपल्स हमारे पास हैं वो हैं तकरीबन हमारे पास जो एग्जांपल्स हैं वो हैं 2 4 6 6 12 एग्जांपल्स हैं, ठीक है। और ये 24 बनेंगी टोटल, ठीक है। अब इसमें से जो है आप मुझे 12 भेज दें, कोई बात नहीं, सारे 24 नहीं भेजें, आप सिर्फ ये वाले भेज दें। अगर आपको टाइम का मसला है तो आप मुझे ये वाले भेज दें, राइट साइड वाले जो है, ओके। और अगर आपको टाइम का मसला नहीं है तो बिस्मिल्लाह करें, कोशिश करें। एक आपको बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें सीखने मिल रही है जिसमें आपको सवाब भी है दुनिया और आखिरत का। और दुनिया में कितनी चीज़ें हमने सीखी है ना, हमने इंग्लिश सीखी, हमने मैथ्स सीखा, हम मैथ्स में गए तो हमने अलजेब्रा सीखा, फिर ज्योमेट्री सीखी, फिर कैलकुलस सीखा, फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सीखी, फिर पता नहीं क्या सीखा क्या नहीं सीखा, ठीक है। साइंस हमने सीखा तो बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, पता नहीं कितने सब्जेक्ट्स, कितने टॉपिक्स, कितने सालों साल हमने लगा दिए सीखने में, है ना। इंग्लिश सीखी हमने, उर्दू सीखी हमने, गुजराती सीखी हमने, यूनानी सीखी हमने, पता नहीं कौन कौन सी लैंग्वेजेस सीखी, बात स्पेनिश बोलते हैं, बात फ्रेंच बोलते हैं, सीखते हैं ना भाई। वो भी तो सीखते हैं किसी मकसद के लिए, किसी काम के लिए सीखते हैं, वैसे ही तो नहीं सीखते। तो ये हमारा मकसद है, ये हमारा काम है, इंशाल्लाह ये हमारे अंडरस्टैंडिंग में इजाफा करेगा। एंड बिलीव मी इट इज़ वेरी इजी, इट इज़ ईजियर देन अदर सब्जेक्ट्स। जिन सब्जेक्ट्स को हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं ना, या 10-10 साल स्कूल में, सुबह 7 बजे बच्चा उठता है, 7:30 बजे नाश्ता करता है, तो 8 बजे से पहले स्कूल पहुंचता है, तो 2 बजे 3 बजे छुट्टी होती है, पूरा दिन वहां रहता है, फिर वहां से आता है थका चुका होता है, फिर जो है शाम में ट्यूशन होती है, उसके बाद एग्जाम्स होते हैं, तो बाई मंथली होते हैं, तो ट्राई मंथली होते हैं, तो सेमिस्टर होते हैं, तो सेमीफाइनल होते हैं, तो फाइनल होते हैं, तो मॉक्स होते हैं, तो ये होता है, तो वो होता है, क्या मिलता है आखिर में, डिग्री मिलती है, लर्निंग की रसीद मिलती है आखिर में, ठीक है ना, कि भाई बच्चा स्कूल गया था, बस ये पता चलता है इससे, है ना। और किस चीज के लिए, दुनिया के लिए, उलूम दुनिया के लिए। ये बात सही है कि उलूम दुनिया से अल्लाह की मार्फत होती है, लेकिन मकसद क्या होता है, मकसद है क्या, हम अपने बच्चों को स्कूल इसलिए भेजते हैं क्योंकि अल्लाह खुश हो, अल्लाह को खुश करने भेजते हैं, इमाम हुसैन को खुश करने भेजते हैं, नहीं, इसलिए नहीं भेजते हम, ये सबको पता है कि हम क्यों भेजते हैं बच्चों को, ठीक है ना। तो उसके लिए अगर हम इतनी मेहनत कर सकते हैं तो थोड़ी सी मेहनत इंशाल्लाह इसके लिए भी करना बनता है। इसके बाद एक नेक्स्ट एक्सरसाइज है, उसको हम इंशाल्लाह, अगर आप में से कोई करना चाहे तो करें, इंशाल्लाह जरूर करके मुझे भेजें, ये रिटन में आएगा काम, ठीक है, ये काम सारा रिटन में आएगा।
और अगर करना चाहते हैं तो बिस्मिल्लाह जरूर भेजें, अगर नहीं करते तो सिर्फ ये वाला भी करें तो मुश्किल नहीं है, मगर सही तरीके से, ठीक है। वर्बल कॉन्जुगेशन करें, वो ज़्यादा ज़रूरी है। वर्बल कॉन्जुगेशन से काम काफ़ी आसान हो जाता है, लेकिन रिटन से काम काफ़ी समझ में आ जाता है। रिटन से काम समझ में आ जाता है, कॉपी मेंटेन होती है आपकी, आपकी जो एक्सरसाइज बुक है, जो आपका जो लर्निंग प्रूफ है वो मेंटेन होता है। तो इसको ज़रा मेंटेन करें, ज़रा मोटा वाला रजिस्टर खरीदें इंशाल्लाह, और उसको जो है आप ये कोशिश करें कि भाई, मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल कि भाई 600 पेज का रजिस्टर ले लिया, खरीद लिया। अब उस 600 पेज के रजिस्टर में आपको 600 कॉन्जुगेशंस लिखनी है। जब आप उसको लिखेंगे ना, जैसे आप 100 पे पहुंचेंगे ना, तो आप कहेंगे कि ये पूरा रजिस्टर मैं खुद ही भर दूंगी, कोई मसला नहीं है। अब मुझे किसी चीज को सीखने की जरूरत नहीं है, ये मुझे समझ में काफी हद तक आ गया, ठीक है ना, और आप खुद ही उसको कॉन्जुगेट कर सकेंगे। कोई क्वेश्चन है तो बताइए। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आलिहि ताहिरीन। जी, कोई क्वेश्चन है तो बताइए। मौलाना, जी। एक वर्ब है लाना, जो हम संडे को कर रहे थे, तो आप प्लीज इसका कॉन्जुगेशन बताएंगे पास्ट टेंस में। किसका? लाना, लाम लाना। आइन मैं लाना। बताता जी, हूँ, मैं बताता ओके, थैंक यू। हूँ। पहले बोल के बताता हूँ, फिर लिख के बताता हूँ, ठीक है। जी, लअना, लअना, लअनू, लअनत, लअनता, लअन्ना। अब ये लानत है, ठीक है, लानत नहीं है, ये है लानत, यानी उस औरत ने लान की, लानत भेजी, ठीक है। ये लफ्ज लानत नहीं है, लानत एक मस्दर है। अगर आइन पे सुकून हो तो फिर वो एक मस्दर बन जाता है, लानतुन। लाअन्ना। अब लाअन्ना जो लफ्ज है, उसमें था लाअन प्लस न, ये बन गया लाअन्ना विद शद्दा और नून। देखें तो आ- आवाज नहीं आ रही है आपकी मौलाना। जी, मैं कुछ बोल ही नहीं रहा हूँ। ओके, सॉरी। ये देखें, ये जो वर्ड है लाअनतुन्ना, इसमें ये जो नून है ये हरूफ असलिया में से है, ये हरूफ असलिया है, यानी ये मादा है, ये रूट लेटर है नून। और ये जो तुन्ना है, ये उसकी जो है जमीर है, जमा मुजक्कर हाजिर के लिए जमीर है, तुन्ना। तो ये नून के लेकिन ऊपर यहाँ पर सॉरी, ये नून के ऊपर शद्दा है, सॉरी सॉरी, सुकून नहीं है, ये शद्दा है, आई एम सॉरी। नहीं, पहला नून जो है लान तुन्ना,